Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all are doing well. In previous lecture we had discussed the spray drying technology, and in today's lecture we will be starting a new advanced granulation technology, that is roller compaction technology, and this is the part 1 of this lecture series. So let's start with the introduction to roller compaction technology. Powder granulation is a process of powder size enlargement that incorporates small particles into larger ones. The definition of granulation comprises a range of different size enlargement methods that can be classified as either dry or wet. In wet methods, a suitable liquid is used to agglomerate the small powder particles into a mass. The wet mass is subsequently dried and sized for further downstream processing needs. Wet granulation methods have been the most widely used powder granulation technology in the production of pharmaceutical products, particularly in modern pharmaceutical manufacturing. पाउडर ग्रैनुलेशन एक प्रोसेस है जिसके अंदर पाउडर साइज इनलार्जमेंट होती है, जिसमें स्मॉल पार्टिकल्स को लार्जर पार्टिकल्स में कन्वर्ट किया जाता है. ग्रैनुलेशन की डेफिनेशन रेंज ऑफ डिफरेंट साइज एनलार्जमेंट मेथड्स से कंप्राइज करती है, जिनको हम ब्रॉडली दो तरह की क्लासेस के अंदर डिफ़ाइन कर सकते हैं, जैसे कि ड्राई ग्रैनुलेशन मेथड और वेट ग्रैनुलेशन मेथड. जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि वेट मेथड्स में एक सूटेबल लिक्विड यूज़ किया जाता है एज ग्रैनुलेटिंग फ्लूइड, जो एग्लोमरेशन में हेल्प करता है, स्मॉल पाउडर पार्टिकल्स को एक मैस फॉर्म में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है, बाइंडिंग में हेल्प करता है. वेट मैस में वेट मासिंग के बाद एक सब्सीक्वेंट स्टेप होता है जिसे हम ड्राइंग का स्टेप कहते हैं, और उसके बाद हम साइजिंग करते हैं पार्टिकल्स की या ग्रैन्यूल्स की. वेट ग्रैनुलेशन मेथड मोस्ट वाइडली यूज मेथड है पाउडर ग्रैनुलेशन टेक्नोलॉजी के अंदर मॉडर्न फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस में. The chief reasons to granulate powders for the manufacture of pharmaceutical dosage forms are described by Christensen and Schaeffer, and they are to improve powder flow properties for dosage, filling and compression processes, to eliminate wet granulation induced degradants and to improve product stability, to prevent active product ingredient from segregating, and to reduce the bulk volume, thereby minimizing storage, enhancing support, to reduce potential environmental and safety hazards. जो मेन रीजंस हैं ग्रैनुलेशन के, दे वर डिस्क्राइब बाय क्रिस्टेंसन एंड शॉपर, और उनमें से कुछ रीजंस ये हैं कि पाउडर की फ़्लो प्रॉपर्टीज़ को इम्प्रूव करने के लिए ग्रैनुलेशन की जाती है, ताकि जब फ़्लो प्रॉपर्टीज़ इम्प्रूव होंगी तो डोजेज फिलिंग में आसानी होगी कंप्रेशन प्रोसेसेस के दौरान. वेट ग्रैनुलेशन को एलिमिनेट करने के लिए उन इंग्रेडिएंट्स में जहाँ पर पार्टिकल्स डिग्रेड हो जाते हैं व्हेन दे कम इन कांटेक्ट विद द लिक्विड और वाटर, उनकी प्रोडक्ट स्टेबिलिटी को इन्हांस करने के लिए वी प्रेफर ड्राई ग्रैनुलेशन. एक्टिव प्रोडक्ट इंग्रेडिएंट्स की सेग्रीगेशन को बचाने के लिए या सेग्रीगेशन ऑफ पार्टिकल्स को प्रिवेंट करने के लिए ग्रैनुलेशन की जाती है. इसके अलावा बल्क वॉल्यूम को रिड्यूस करने के लिए ग्रैनुलेशन की जाती है. बल्क वॉल्यूम रिड्यूस होगा तो ये स्टोरेज में हेल्पफुल होगा और ट्रांसपोर्टेशन में हेल्पफुल होगा, यानी रिस्क को मिनिमाइज़ करेगा ड्यूरिंग स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन. एंड इसके अलावा ग्रैनुलेशन की जाती है टू रिड्यूस द पोटेंशियल एनवायरमेंटल एंड सेफ्टी हैज़र्ड्स एसोसिएटेड विद द पाउडर पार्टिकल्स.
What is the background for this whole granulation process? Granulation methods are used in the pharmaceutical industry to enlarge and densify small powder particles into larger ones, typically to improve powder flow so that the material can be processed effectively and efficiently further into solid dosage forms. There are two methods of granulation that we had already discussed, wet and dry. Dry granulation operations do not use moisture or heat to process powders into densified granules. The pharmaceutical industry employs two methods of dry granulation, that is slugging and roller compaction. Granulation methods pharmaceutical industry में यूज़ किए जाते हैं in order to enlarge and densify small particles into larger ones, typically पाउडर फ्लो को इम्प्रूव करने के लिए, ताकि मटेरियल्स को इफ़ेक्टिवली प्रोसेस किया जा सके और एफिशिएंटली उन्हें डोजेज फॉर्म्स में कन्वर्ट किया जा सके. दो तरह की ग्रैनुलेशन मेथड्स हैं, वेट एंड ड्राई ग्रैनुलेशन मेथड. वी आर नॉट डिस्कसिंग वेट ग्रैनुलेशन मेथड इन डिटेल ओवर है. रोलर कॉम्पैक्शन में वी नीड टू डिस्कस अबाउट the dry granulation operations. So dry granulation operations में मॉइस्चर की नीड नहीं होती या फिर हीट प्रोसेसेस की नीड्स नहीं होती पाउडर को डेंसिफाई करने के लिए इनटू ग्रैन्यूल्स. फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री दो तरह के ड्राई ग्रैनुलेशन मेथड्स एम्प्लॉय करती है. वन इज़ कॉल्ड एज स्लगिंग एंड द अदर वन इज़ कॉल्ड एज रोलर कॉम्पैक्शन. In dry pharmaceutical granulation processing, the powder particles are aggregated under high pressure, typically a pressure of 30 to 70 bar. Particulate matter can be aggregated when compressed at high pressure because of bonding forces developed by direct contact between the solid surfaces. The high pressure serves to improve the contact area between the surfaces and thus the overall bonding strength. Sometimes a binding agent is needed to provide additional bonding strength. Pharmaceutical granulation processing में powder particles की aggregation, dry powder particles की aggregation under high pressure की जाती है, typically pressure 30 to 70 bar में. पार्टिकुलेट मैटर या स्मॉल पार्टिकल्स या फाइन पार्टिकल्स एग्रीगेट होते हैं जब उन्हें कंप्रेस किया जाता है एट हाई प्रेशर, बिकॉज बॉन्डिंग फोर्सेस डेवलप होती हैं बाय डायरेक्ट कांटेक्ट बिटवीन दी सॉलिड सरफेसेस. तो ये तीन पार्टिकल्स अगर डायरेक्ट कांटेक्ट में आएंगे ड्यू टू कंप्रेशनल फोर्सेस, तो उनमें बॉन्डिंग फोर्सेस डेवलप होंगी. हाई प्रेशर कॉन्टेक्ट एरिया इम्प्रूव करता है और सरफेसेस के दौरान, और इसी वजह से कॉन्टेक्ट एरिया इम्प्रूव करने की वजह से ओवरऑल बॉन्डिंग स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करता है. समटाइम्स बाइंडिंग एजेंट की ज़रूरत होती है एडिशनल बाइंडिंग स्ट्रेंथ या बॉन्डिंग स्ट्रेंथ लाने के लिए, और इस सूरत में हम ड्राई बाइंडर्स यूटिलाइज़ करते हैं. In the pharmaceutical industry, dry granulation processing in the 1950s to 1970s favored a process called slugging. This process design consisting of feeding a powder into a large compression machine such as a Stokes D3 type compression machine, where the powder was compressed into a large tablet or slugs typically in the order of 1 inch diameter with a tablet gauge of about 0.25 inch. The tablet slugs were subsequently milled by a separate sizing machine to an appropriate particle size distribution and further processed into pharmaceutical capsules, powders for oral suspension, sachets or tablet dosage forms. Pharmaceutical industry में dry granulation processing 1950s और 70s में through slugging की जाती थी. स्लगिंग के प्रोसेस के अंदर पाउडर्स को फीड किया जाता है इनटू अ लार्ज कंप्रेशन मशीन्स लाइक स्टोक्स D3 टाइप कंप्रेशन मशीन्स, जहाँ पर पाउडर को कंप्रेस किया जाता है इनटू लार्ज टैबलेट्स या स्लग्स. टिपिकली ये जो लार्ज टैबलेट्स और स्लग्स फॉर्म होती हैं वो 1 इंच डायमीटर की होती हैं और उनमें टैबलेट गॉज 0.25 इंच का होता है.
टैबलेट स्लग्स को वंस दे आर फॉर्म्ड इनको मिल किया जाता है या साइज़ रिड्यूस किया जाता है बाय मिलिंग टेक्निक्स, और उसके बाद इनकी डिफरेंट साइजिंग मशीन से सेपरेशन होती है जो ग्रैन्यूल्स बनते हैं उनकी अप्रोप्रिएट साइज़ में, और अप्रोप्रिएट साइज़ डिस्ट्रीब्यूशन होती है, एंड देन उसको फिर फर्दर प्रोसेस किया जाता है इनटू फार्मास्यूटिकल कैप्सूल्स, या फिर वो पाउडर फॉर ओरल सस्पेंशंस के तौर पे यूज़ होते हैं, या फिर उन्हें सैशेस में पैक किया जाता है, या फिर उनकी फर्दर टैबलेट डोजेज फॉर्म्स में उन्हें कन्वर्ट कर दिया जाता है. The slugging process is externally influenced by raw material feed properties such as powder cohesiveness, density, flow characteristics, and powder particle size distribution. The slugging machine's design characteristics such as machine type, feed hopper, feed frame, die diameter, tooling features, compression speed, and slugging pressure also influence the slugging process and the final product properties. In general, the key processing operational aspects of slugging is to maintain a uniform powder fill weight into the dies during the dynamics of the slugging process. This assures the best chance to manufacture uniform powder slug and ultimately uniform densified granules. Slugging process externally influence होता है raw material की feed properties से, जैसे कि पाउडर कोहेसिवनेस, डेंसिटी ऑफ द पाउडर्स, फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स पाउडर्स के, और पाउडर पार्टिकल की साइज डिस्ट्रीब्यूशन. स्लगिंग मशीन का डिज़ाइन और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक मशीन की टाइप कौन सी है, फीड हॉपर कैसा है, फीड फ्रेम, डाई डायमीटर और टूलिंग फीचर्स, कंप्रेशन स्पीड कैसी है, और स्लगिंग प्रेशर भी इन्फ्लुएंस करता है स्लगिंग प्रोसेस के ऊपर और फाइनल प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर. जनरली स्पीकिंग की प्रोसेसिंग ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स स्लगिंग के कहते हैं कि यूनिफॉर्म पाउडर फिल वेट मेंटेन इन डाइज में ड्यूरिंग द स्लगिंग प्रोसेस. ये श्योर करता है कि यूनिफॉर्म पाउडर स्लग्स मैन्युफैक्चर होंगे और अल्टीमेटली यूनिफॉर्म ग्रैन्यूल्स फॉर्म होंगे या डेंसिफाइड ग्रैन्यूल्स फॉर्म होंगे. स्लगिंग प्रोसेस के कुछ डिसएडवांटेजेस हैं. उन डिसएडवांटेजेस में मेन डिसएडवांटेजेस ये हैं. सिंगल बैच प्रोसेसिंग है, इट रिक्वायर्स फ्रीक्वेंट मेंटेनेंस चेंज ओवर, there is a poor process control, there is poor economic scale or poor economies of scale, low manufacturing throughput per hour, excessive air and sound pollution, increased use of storage containers and increased need of manufacturing space, increase of logistics, and more energy and time is required to produce 1 kilogram of slugs than 1 kg of roller compact. Slugging compression is normally performed at 4 to 6 tons hydraulic pressure at a rate of 10 to 30 turret revolutions per minute. Slugging type of slugging machine output ranges from 30 to 50 kg per hour, and the machines are not instrumented with modern devices to control their performance. स्लगिंग कंप्रेशन नॉर्मली परफॉर्म होती है 4 to 6 टन्स हाइड्रोलिक प्रेशर के ऊपर और 10 to 30 टरेट रेवोल्यूशंस पर मिनट रेट होता है. टिपिकल स्लगिंग मशीन की आउटपुट रेंज वेरी करती है फ्रॉम 30 to 50 किलोग्राम पर आवर, और मशीन्स में मॉडर्न डिवाइस कंट्रोल्स प्रेजेंट नहीं होते, जैसे प्रोग्रामेबल लॉजिकल कंट्रोल डिवाइसेस प्रेजेंट नहीं होती जो मशीन को कंट्रोल करेंगी इन विद रिस्पेक्ट टू देयर परफॉर्मेंस. ये मेन डिसएडवांटेज है स्लगिंग प्रोसेस का, ये स्लगिंग मशीन्स का. कुछ डिसएडवांटेजेस यहाँ मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन कर दिए हैं. So next topic is the benefits of roller compaction, why we are preferring roller compaction over slugging.
Unlike the slugging process technology, the roller compaction technology is well suited for dry granulation agglomeration in the era of modern development of active pharmaceutical ingredients in pharmaceutical plants. The increasing scale of manufacturing pharmaceutical products worldwide, the need for high processing rates, together with increased levels of good manufacturing practices, necessitate controlled drug granulation processes with as few processing steps as possible. This has been accomplished by instrumenting roller compactors to automate and control the mechanical process. Roller compaction technology plays a very important role in providing competitive cost control, safety, and quality products in the pharmaceutical industry. Unlike slugging process technology, roller compaction technology well suited है for dry granulation agglomeration के लिए modern pharmaceutical development में active pharmaceutical ingredients की और या modern era of pharmaceutical plants के अंदर मैन्युफैक्चरिंग फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स वर्ल्ड वाइड इंक्रीज़ हो रही हैं और ये डिमांड करती है हाई प्रोसेसिंग रेट्स को. हाई प्रोसेसिंग रेट्स के अलावा इंक्रीज लेवल ऑफ गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस आर टू बी फॉलोड, जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं. दिस इन टर्न्स नेसेसिटेट दी कंट्रोल ड्रग ग्रैनुलेशन प्रोसेसेस, जिसके अंदर जितने कम से कम प्रोसेसिंग स्टेप्स हों उतने ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं इन ऑर्डर टू मेंटेन द जीएमपी रिक्वायरमेंट्स. इसको अकम्प्लिश करने के लिए रोलर कॉम्पैक्टर्स को ऑटोमेट किया जाता है और उसके मैकेनिकल प्रोसेसेस को कंट्रोल किया जाता है. रोलर कॉम्पैक्शन टेक्नोलॉजी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन प्रोवाइडिंग कॉस्ट इफेक्टिव सेफ्टी एंड क्वालिटी प्रोडक्ट्स इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री. There are some key benefits which are identified over here in this table. Simplifies processing. रोलर कॉम्पैक्शन टेक्नोलॉजी का बेनिफिट है कि प्रोसेसिंग को सिंप्लीफाई करती है. इट फैसिलिटेट्स द पाउडर फ्लो, यूज मिनिमल एनर्जी टू ऑपरेट, रिक्वायर्स लेस मैन टू आवर्स टू ऑपरेट, improves drug dosage weight control, reproduces consistent particle density, produces good tablet and capsule disintegration, eliminates aqueous and solvent granulating and uses less raw materials, eliminates water-induced degradants, improves process cycle time, it prevents particle segregation and facilitates continuous manufacturing, improves content uniformity and does not require explosion-proof room for equipment, produces a dry product that is process scalable. सो ये कुछ एडवांटेजेस हैं रोलर कॉम्पैक्शन के, जिनमें प्रोसेस की सिंप्लीफिकेशन है, पाउडर फ्लो को फैसिलिटेट करती है रोलर कॉम्पैक्शन टेक्नोलॉजी, मिनिमल एनर्जी रिक्वायर होती है इन ऑर्डर टू ऑपरेट, लेस मैन आवर टाइम रिक्वायर्ड है ऑपरेशन के लिए, ड्रग डोजेज के वेट कंट्रोल को इम्प्रूव करता है रोलर कॉम्पैक्शन टेक्नोलॉजी व्हेन इट इज़ कंपेयर्ड विद द स्लगिंग मेथड. कंसिस्टेंट रिप्रोड्यूसिबिलिटी है पार्टिकल डेंसिटी की, गुड टैबलेट्स और कैप्सूल डिसइंटीग्रेशन रिजल्ट होती हैं व्हेन दे आर प्रिपेयर्ड विद रोलर कॉम्पैक्शन टेक्नोलॉजी. एक्वस या सॉल्वेंट ग्रैनुलेटिंग एजेंट की नीड ख़त्म हो जाती है. ड्राई ग्रैनुलेशन है रोलर कॉम्पैक्शन के थ्रू, तो हमें एक्वस और सॉल्वेंट ग्रैनुलेटिंग एजेंट्स की नीड नहीं पड़ती. लेसर रॉ मटेरियल्स यूज़ होते हैं एज़ कम्पेयर टू वेट ग्रैनुलेशन. वाटर इंड्यूस्ड डिग्रेडेशन को एलिमिनेट करती है बिकॉज वी आर नॉट यूजिंग एनी टाइप ऑफ सॉल्वेंट इन इट और वाटर इन इट. प्रोसेस साइकिल टाइम इम्प्रूव होता है विद द रोलर कॉम्पैक्शन टेक्नोलॉजी एंड इट प्रिवेंट्स पार्टिकल सेग्रीगेशन, जो एक ओवरऑल बेनिफिट है फॉर ग्रैनुलेशन. कंटिन्यूस मैन्युफैक्चरिंग को फैसिलिटेट करती है बिकॉज इट इज़ एन ऑटोमेटेड डिवाइस और ऑटोमेटेड मैकेनिकल प्रोसेस है.
बॉन्डिंग यूनिफॉर्मिटी कैन ऑल्सो बी इम्प्रूव्ड, और इसके लिए कोई स्पेसिफिक एक्सप्लोजन प्रूफ रूम की ज़रूरत नहीं है इक्विपमेंट को रखने के लिए। एंड फाइनली एक ड्राई प्रोडक्ट प्रोड्यूस होती है इस रोलो कॉम्पैक्शन टेक्नोलॉजी से, दैट इज़ प्रोसेस स्केलेबल, यानी आप प्रोसेस के अकॉर्डिंगली उसे बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। Compaction theory. The bonding forces in a dry aggregate are important to granulation properties such as granule integrity, flowability, friability, density, compressibility, and size of downstream manufacturing process steps. Rumpf and co-workers described the bonding mechanisms occurring during granulation as a mixture of van der Waals forces, mechanical interlocking, and a recombination of bonding established between freshly created surfaces and solid bridges, created because of partial melting and solidification during compression. बॉन्डिंग फोर्सेस ड्राई एग्रीगेट के अंदर इम्पॉर्टेंट हैं ग्रैनुलेशन प्रॉपर्टीज़ को इन्हांस करने के लिए, लाइक ग्रैन्यूल की इंटीग्रिटी को इन्हांस करने के लिए, फ्लोएबिलिटी, फ्राइबिलिटी, डेंसिटी, कंप्रेसिबिलिटी, और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस स्टेप्स में साइज़ फॉर डाउनस्ट्रीम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस स्टेप्स। रम्फ व कोवर्कर्स ने बॉन्डिंग मैकेनिज़म्स बताए थे ड्राई ग्रैनुलेशन के, एंड दे सेड दैट मिक्सचर ऑफ बॉन्डिंग मैकेनिज़म्स इन्वॉल्व होते हैं ड्राई ग्रैनुलेशन में, जिनमें वैन डर वाल्स फोर्सेस हैं, मैकेनिकल इंटरलॉकिंग है, इसके अलावा रिकम्बिनेशन ऑफ बॉन्ड्स है दैट आर एक्चुअली इस्टेब्लिश्ड बिटवीन फ्रेशली क्रिएटेड सरफेसेस और सॉलिड ब्रिजेस जो कि पार्शियल मेल्टिंग की वजह से क्रिएट होते हैं, and they solidifies during compression. The process of dry granulation relies on interparticulate bond formation. Granule bond formation is characterized in different stages which usually occur in the following order. That is, one is particle rearrangement, and then particle deformation occurs, particle fragmentation, and particle bonding. ग्रैनुलेशन रिलाई करती है इंटरपार्टिकुलेट बॉन्डिंग के ऊपर या इंटरपार्टिकुलेट बॉन्ड फॉर्मेशन के ऊपर। ग्रैन्यूल बॉन्ड फॉर्मेशन डिफरेंट स्टेजेस में अकर होती है, जो कि पार्टिकल रीअरेंजमेंट से स्टार्ट होते हैं और पार्टिकल बॉन्डिंग पे ख़त्म होते हैं। तो टोटल ऑल टुगेदर 4 स्टेजेस हैं ग्रैन्यूल बॉन्ड फॉर्मेशन की, दैट इज़ पार्टिकल रीअरेंजमेंट, पार्टिकल डिफॉर्मेशन, पार्टिकल फ्रेगमेंटेशन एंड पार्टिकल बॉन्डिंग। अब इन चारों स्टेजेस को हम अलहदा पढ़ते हैं कि इन स्टेजेस में आखिर हो क्या रहा है। पार्टिकल रीअरेंजमेंट अकर्स इनिशियली एज पाउडर पार्टिकल्स बिगिन फिलिंग void spaces. Air begins to leave the powder blends, interstitial spaces, and particles begin to move closer together. This action increases the powder blend's density. Particles shape and size are key factors in the rearrangement process. Spherical particles will tend to move less than particles of other shapes because of their close initial packing to one another. पार्टिकल रीअरेंजमेंट स्टार्ट होती है जब पाउडर पार्टिकल्स वॉइड स्पेसेस में फिल होना स्टार्ट होते हैं। जैसे ही वॉइड स्पेसेस फिल होती हैं, एयर उन वॉइड स्पेसेस से निकलती है या लीव करती है पाउडर ब्लेंड की इंटरस्टेशियल स्पेसेस से, और पार्टिकल्स क्लोज़र मूव करते हैं। ये एक्शन इंक्रीज़ करता है पाउडर ब्लेंड की डेंसिटी को। पार्टिकल की शेप और साइज़ की फैक्टर्स हैं रीअरेंजमेंट प्रोसेस के अंदर। स्फेरिकल पार्टिकल्स कम मूव होते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर शेप्स बिकॉज स्फेरिकल पार्टिकल्स के अंदर क्लोज इनिशियल पैकिंग होती है बिटवीन ईच अदर। आफ्टर पार्टिकल रीअरेंजमेंट, पार्टिकल deformation occurs. Particle deformation occurs as compression forces are increased.
This deformation increases the point of contact between particles where bonding occurs and is described as plastic deformation. पार्टिकल डिफॉर्मेशन उस वक्त स्टार्ट होती है जब कंप्रेशन फोर्सेस इंक्रीज होती हैं. ये डिफॉर्मेशन इंक्रीज करती है कांटेक्ट पॉइंट्स को पार्टिकल्स के जहाँ पर बॉन्डिंग होनी है, और इस डिफॉर्मेशन को प्लास्टिक डिफॉर्मेशन कहते हैं. थर्ड स्टेज में पार्टिकल फ्रेगमेंटेशन अकर होती है. Particle fragmentation follows as the next bonding stage. This occurs at increased compression force levels. At this stage, particle fracturing creates multiple new surface sites, additional contact points, and potential bonding sites. Particle fragmentation next stage है. पार्टिकल फ्रेगमेंटेशन नेक्स्ट स्टेज है. इसके अंदर कंप्रेशन फोर्स का लेवल इंक्रीज होता है और इस स्टेज में पार्टिकल्स फ्रैक्चर होते हैं एंड फ्रैक्चरिंग मल्टीपल न्यू सरफेसेस या न्यू साइट्स क्रिएट करती है जो एक्चुअली पार्टिकल्स को एडिशनल कांटेक्ट पॉइंट्स दे रहे हैं, और इसी वजह से पोटेंशियल बाइंडिंग या बॉन्डिंग साइट्स इंक्रीज हो रही हैं. Particle bonding occurs when plastic deformation and fragmentation occurs. It is generally accepted that bonding takes place at the molecular level and that this is due to the effect of van der Waals forces. पार्टिकल बॉन्डिंग उस वक्त अकर होगी जब प्लास्टिक डिफॉर्मेशन और फ्रेगमेंटेशन अकर हो रही है, और जनरली ये एक्सेप्ट किया जाता है कि बॉन्डिंग उस वक्त होती है जब मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर इंटरेक्शन हो रहा होता है पार्टिकल्स का, और मोस्टली पार्टिकल बॉन्डिंग इज अ रिजल्ट ऑफ van der Waals forces. When powder granules undergo an applied force or stress, a stress force is released from the granules. The granules attempt to return to their original shape or form. This is described as elastic deformation. A deformation that does not totally recover after the stress is released is a plastic deformation. Elastic and plastic deformation can occur simultaneously, but one effect usually predominates. जब पाउडर ग्रैन्यूल्स के ऊपर फोर्स या स्ट्रेस अप्लाई होती है तो स्ट्रेस फोर्स की एप्लीकेशन के बाद वो स्ट्रेस फोर्स रिलीज़ भी की जाती है. ग्रैन्यूल्स अगर अपनी ओरिजिनल शेप में दोबारा वापस आ जाएं व्हेन द स्ट्रेस फोर्स इज़ रिलीज, तो डिफॉर्मेशन इज़ इलास्टिक डिफॉर्मेशन. और अगर ग्रैन्यूल्स की डिफॉर्मेशन टोटली रिकवर ना हो स्ट्रेस रिलीज़ के बाद, यानी वो डिफॉर्म्ड ही रहे, अपनी ओरिजिनल शेप में वापस ना आए, तो डिफॉर्मेशन प्लास्टिक डिफॉर्मेशन कहलाती है. इलास्टिक और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन साइमल्टेनियसली अकर होती हैं, और इन्हीं डिफॉर्मेशंस में एक इफेक्ट होता है जो यूजुअली प्रीडोमिनेट करता है. इन केस ऑफ कंप्रेशन प्लास्टिक डिफॉर्मेशन प्रीडोमिनेट करती है. I would like to explain all these three stages by drawing something. So we were talking about the particle rearrangement. See, for example, these were the particles that were present. So this is the die cavity. When these particles would actually try to be present over here, they would rearrange themselves and the void spaces between them would be reduced, or the air begins to leave. This is the powder which is being flowed from hopper to die cavity. Say for example here was hopper and this is the die cavity. So when they actually come and fill over here in this area which is die cavity, it would
try to rearrange themselves, and the air entrapped between the void spaces would leave. Once this rearrangement is done, particle deformation occurs. Particle deformation occurs when the point of contact between the particles is reduced. Say for example, I'm talking about these two particles. The point of contact would be reduced once this particular stress or pressure would be applied, or force would be applied. So this point of contact or reduced point of contact would lead to bonding. This would actually be compressed, like initially it was spherical, and after the application of a force it is compressed like this. The interaction between these two areas is increased, or the bonding is being done. If it remains in this flattened surface or flattened shape after the removal of or this is force, then this is called as plastic deformation. And after the removal of force, if it gets converted into spherical shape again, this is called as elastic deformation. The interlocking point between these two particles is actually the bonding site or binding site, where the contact angle have been reduced due to the application of force or stress. Okay, we will continue the discussion on this topic in the next lecture, that is compaction theory. Thank you for today's class. Let's call it a day. Take care of yourself and everyone around you. Allah Hafiz.